गया है, वो भी स्टॉक करीब करीब 5% ऊपर है। EIH अर्थात जीवीके में भी हमने देखा तेजी का ही ट्रेड बनता दिखाई दिया। सरकार PLI के तहत अब फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने वाली है, उसका फायदा हिंदुस्तान फूड्स को मिला है। मिसेस बेक्टर रीसेंट लिस्टिंग, ये वो पूरा फूड प्रोसेसिंग प्ले है, 1% ऊपर आया। ADF फूड्स, DFM फूड्स, ये वो कंपनियां हैं जो फेवर में आएंगी PLI के तहत। इनकी ओर से इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद जरूर जताई जा सकती है। अब कुछ और गेनर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मुकन जिन्होंने कल वो लैंड बेचा, उस वो खबर हमने आपको बताई थी। स्टॉक आज 13% ऊपर। ग्रोदरेज प्रॉपर्टीज में 3% की तेजी। स्पाइस जेट IRB इंफ्रा में आज हम देख रहे हैं खरीदारी हुई है, लेकिन लूजिंग एंड पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। याद ये कल से निफ्टी बैंक का हिस्सा बनेगा, लेकिन आज यहां पर पोजीशंस हल्की हुई हैं। अदानी पावर, IDFC फर्स्ट बैंक प्रीमियम पर भले ही QIP लाए हो, लेकिन उसका ज्यादा कुछ असर नहीं देखने को मिला है। पिकवाली के घेरे में ये काउंटर और माइंड ट्री में भी हम देख रहे हैं करीब करीब 3% का दबाव। IDFC में लिक्विडेशन होगी बड़े पैमाने पर प्रोमोटर स्टेक की, उसका भी शायद कुछ ना कुछ डर है। तो ये फिलहाल ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल है, लेकिन एक स्पेस जो यहां से अब अच्छी खासी हरकत में दिखाई देगी, जहां पर मौका है पोजीशन लेने का और बिजनेस बढ़ने का, वो है दरअसल आपका एयर कंडीशनिंग का मार्केट। दरअसल इस साल देश में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। अभी से गर्मी का यह आलम है कि मार्च का महीना पिछले 76 सालों में सबसे गर्म दर्ज हुआ है, और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने इसी पर एक रिपोर्ट निकाली है। जेफरीज कह रहा है कि इसका फायदा AC बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा। देश में AC की बिक्री में तेजी आई है। वर्क फ्रॉम होम के चलते लोग 3 स्टार से 5 स्टार AC पर शिफ्ट हो रहे हैं, और इसका बिक्री पर कितना असर पड़ेगा, कितना फायदा है इन कंपनियों के लिए, हमारे साथ ब्लू स्टार के MD बी त्यागराजन जुड़ गए। मिस्टर त्यागराजन, गुड आफ्टरनून सर। मार्च में हम सब ने देखा बहुत गर्मी पड़ रही है। एक अपडेट हमें सुबह हमारे कोलीग दे रहे थे कि दिल्ली में तापमान बढ़ने लगा है। बॉम्बे में हमने ऑफ लेट 38-40 डिग्रीज टेम्परेचर विटनेस कर लिया है। ये आपके लिए ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए ट्रांसलेट करता है। एट द मोमेंट क्या इंक्वायरी सेल्स बढ़ने लगी हैं? Good afternoon. Thank you for having me in your show. It is true. As you might have noticed in Q3 itself, it witnessed a growth. There was a growth of 17% for Blue Star. I think market also would have grown around the same range. In January, February, we witnessed robust lifting from the dealers as well as secondary sales. In the month of March, the sales continued to be very good, and it has picked up almost at all locations. In Tamil Nadu, where the elections are going on, it was slow for almost 2-3 weeks. In the past 3-4 days, there also the sales are good. On the whole, as I had indicated earlier, Q4, the industry is expecting a growth of around 20%, and Q1 going forward into the peak summer, minimum of 25% growth should be there. And the Blue Star will grow faster than the market. Okay, so you're expecting to top the 25% growth, sir. Which sectors do you see this growth coming in? Is it going to be led by the urban markets, or you're seeing equal participation and interest from the tier 2, tier 3 markets as well, sir? The skew is towards tier 3, 4, 5, where the penetrations were much, much lower. For the past 2-3 years, we have been witnessing great demand from these locations. So tier 3, 4, 5, I think will constitute around 65% of the sales. It is mainly from aspirational middle class. It is mainly from first-time buyers. It is in the recent past, we have witnessed a huge surge in 0% interest scheme or the installment purchase. And most importantly, in the big cities, people are buying their second and third air conditioners, or they are moving into larger homes. Therefore, they are equipping themselves. In that case, sir, what are Blue Star's plans in terms of product launches? Anything specific that you've planned? Also, raw material costs have gone up in the last few months, especially metal prices, other products that you particularly use. What has been the impact per se? And looking at the demand that's coming in, would you want to increase your capacity at this point in time? Both the questions are interrelated. From January 1, we increased the prices by 5 to 8%. Still, the demand was holding, and we have been doing well. But the commodity prices are not softening. It is not only steel, copper.
It is also ABS plastic. It is the ocean freight. It is the local transportation. The escalation is on. Therefore, the second price rise will be applicable from tomorrow. That will be from 3 to 5%. Now, what happens when the prices are going up, where the demand is good, people want to buy it, their wallet is limited. They are not going to be, if they have decided to buy air conditioner between 30 to 35,000, what they will end up doing is they will end up buying lower end category products, or instead of a 5-star, they will buy a 3-star. Instead of a 3-star, they will buy 2-star. Therefore, we rejigged our product portfolio. The escalation is a reality, but we have to make the products affordable without sacrificing our margins. 2 is for growing our market share from the current level of 13% to 15%. We have to address the bottom of the belly of the market. Therefore, we have launched around 90 SKUs, out of which 32 are very attractively priced. It is 10% lower than last year prices, despite the price increases. So therefore, no longer Blue Star will be seen as a very high priced product at all. So earlier we had this difficulty to deliver a particular margin at the same time grow the market share. That issue has been resolved. During the past 7-8 months, we have rejigged our product portfolio. Pleasure speaking to you as always, Mr. Tyagarajan. All the very best for the coming summer. It's going to be interesting and a very hot one, and I'm hoping it's going to be hot for the stock as well. Stock आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. ब्लू स्टार इस समय 805 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा जेफरीज की रिपोर्ट में जो टारगेट है वो ब्लू स्टार पर खास तौर से 1050 का है.